This is Rangdum, a village in Ladakh with surreal hills on one side and rocky mountains and glaciers on the other. Almost 100 kilometers away from Kargil and 4,400 meters above sea level. This is no ordinary landscape. An incredibly rugged terrain, dangerous hairpin bends and sub-zero temperatures make this place extremely difficult to work in. In a place at this altitude, the lack of oxygen means that the machines that run here are automatically derated to a lower horsepower. And so, only the most powerful vehicles are capable of performing in such conditions. 6 महीने से चला रहा हूँ। इस गाड़ी की एवरेज जो माइलेज है बहुत अच्छी है। बाकी जो लोड जितना मर्जी डाल लो गाड़ी मानती नहीं है। जैसे मर्जी चढ़ाई में चढ़ा दो इसको। Skylark Infrastructure, a prominent name in road construction, is currently working on the upgradation of one of the sections of the Kargil-Zanskar highway, which is almost 100 kilometers long. The extremely remote location of the project, along with its high altitude and rough terrain, makes prompt and localized service all the more important. जो हमने पूरे साल का काम है वो हमें 5-6 महीना में कवर करना है। उस हिसाब से हम हर एक गाड़ी हमारी डबल शिफ्ट में और यहाँ पे सब काम डबल शिफ्ट में चलता है हमारा। And so, this is where Aishar's on-site support comes into action. To make sure that this project is completed on time, Aishar's on-site support with the team of 14 people are at work from last 1 year at this remote location. Their aim is to provide prompt and 24/7 service even in most extreme of conditions. यहाँ पे हमें मेन चैलेंज था पार्ट का, क्योंकि अगर पार्ट नहीं होंगे तो गाड़ियाँ ऑन रोड नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमने क्या करा, पहले तो जीएसटी क्रिएट करवाया। यहाँ पे एक वेयर हाउस यहाँ पे लिया कारगिल में, जिससे हमें ये हेल्प होगी कि डायरेक्टली हम यहाँ से ऑर्डर करते थे पार्ट और वो डायरेक्ट कारगिल में यहाँ पे पहुँच जाता था। देन उसके बाद यहाँ पे हमने कंटेनर सेटअप भी करवा लिया साइड पे और फ्लोट भी रखवाए, ताकि जो मेजर फेलियर अगर कुछ होता है इनिशियल स्टेज में तो उसको हम जल्दी से कवर कर सकें और अप टाइम जो है बेटर करवा सकें। इसके लिए हमने यहाँ पे ट्रांसमिशंस, इंजन जो है रखे हुए हैं। हम लोग का आइचर का साइड सपोर्ट 24/7 है, तो कभी भी कॉल आता है हम लोग को। जैसे रात में भी आता है, कभी कभी एक्सट्रीम कंडीशन रहते हैं, माइनस में भी टेम्परेचर रहते हैं कभी कभी, तब भी जाके हम लोग को अटेंड करना पड़ता है और व्हीकल को ऑन रोड करके देना पड़ता है। ये आइचर की साइड सपोर्ट की जिम्मेदारी रहती है। The team is dedicated to deliver even in the harshest of the conditions and willing to go the extra mile for uptime, like when a breakdown happened in Zojila. हमारी जो टीम थी वो पैकेज 5 पे थी, तो यहाँ से रात को कॉल आया इन टीम के पास 1 बजे के आसपास। तो उसी टाइम पे कस्टमर की मैन पावर ली गई, यहाँ पार्ट निकाला गया स्टॉक से एंड देन उसके बाद यहाँ से टीम निकली। जोजिला का डिस्टेंस यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 250 किलोमीटर है और टीम को यहाँ से पहुँचने में अप्रॉक्सीमेट लग गए 8 से 9 घंटे। विद इन 24 आवर टीम ने गाड़ी को जो है वो ऑन रोड करके दिखाया। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था, क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर भी -10 डिग्री में था। आइशर की जो टीम है पिछले 2 साल से हम लोग हमारे साथ में हैं यहाँ पे। हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है यहाँ पे। उन्होंने फुल सपोर्ट किया है इन टर्म्स ऑफ मैन पावर एंड मटेरियल। No matter how extreme the conditions are, Aishar's on-site support team is committed to deliver uptime and productivity. Our unwavering support will always be there to ensure you are on time all the time.